Hello everyone, welcome back to the channel Devotion of Knowledge. Today we are back again with another YouTube video, and in this video we are going to do something unique that we have not yet done before. क्योंकि जनरली हम करते हैं डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम कर लेते हैं, कभी कभी वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, कभी कभी थोड़ा साइबर सिक्योरिटी देख लेते हैं. अभी रिसेंटली एक दो थोड़े प्रोडक्टिविटी के वीडियोस मैंने डाले थे. सब कुछ कर रहे हैं हम एक साथ एक चैनल पे. फुल स्टैक चैनल है हमारा. But in this video, we are going to explore something really unique because in this video, we are going to explore that how LeetCode works. Yes, you heard it right. Right from opening the website, from opening the question, writing the code, submitting the code, getting the errors, or getting accepted, then getting whatever the data of how many people are ahead of you, and all such things we are going to analyze in this video, that how it is actually implemented. So basically you would say rough and tough, we can say मतलब front end back end सब कैसे connected, everything we are going to see. So first of all you have to understand client server architecture, I would say. So see, how the website works, one should know. For example, this is one user. Yeah, this is one user, I would say. Any user of अभी तो जनरली कोई भी वेबसाइट रखते हैं. Any user. So he's on his machine. It is also it can be also termed as client. This is client, and there is one centralized server. I would not say centralized is not the right word. क्लाइंट जो भी कुछ रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर के साथ एक कनेक्टेड होता है डेटाबेस जिसको हम डीबी कहते हैं. एंड वॉट एवर रिक्वेस्ट क्लाइंट सेंड्स टू सर्वर, सर्वर प्रोसेस ऑल दिस रिक्वेस्ट. जो भी रिक्वेस्ट आई वो अंदर अंदर प्रोसेस करेगा. मतलब कुछ इसमें कुछ बिजनेस लॉजिक होगा, जरूरत पड़ी को इसको डेटाबेस में इन्वॉल्व करेगा, एंड वॉट एवर द फाइनल कैलकुलेट आउटपुट इज, it will be sending it to the client as response. So basically mainly request और response का ही होता है इसमें. अभी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो साइकिल है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का, इसको मल्टीपल वेज वी कैन इम्प्लीमेंट. वन इज आई वुड से रेस्ट. Many of you might be knowing what is REST API. If you are not aware, we have uploaded a video on this channel in which we have developed REST API using Flask framework of Python. So if you are not aware, you can definitely check it out. And another one is, we can say, okay, another is GraphQL. This is developed by Facebook, or we would say Meta nowadays. See, there is quite a large difference between REST and GraphQL. Both of them are mainly for request and response. मीन्स क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है एपीआई का, वही ये दोनों इंप्लीमेंट करते हैं, पर देर इज अ क्वाइट ह्यूज डिफरेंस. सो लीट कोड यूजेस GraphQL. अभी थोड़ा GraphQL डीप में नहीं जाना है, बट फॉर एग्जांपल if you are using REST, so in REST API many times you are searching for some data, for example cricket players, for some cricket players. Suppose तुम्हें 5 क्रिकेट प्लेयर का डेटा चाहिए और बैकएंड में से डेटा आ रहा है 100 प्लेयर्स का. तो तुम्हें फ्रंट एंड में इस 100 प्लेयर के डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा टू फाइंड आउट दिस इफेक्टिव 5 वैल्यूज. बट GraphQL में क्या होता है, we are only getting data we are only getting data which we want. अभी if I tell you in easy words, REST API and GraphQL. See, REST is like buffet restaurant.
आपको पता है आपको क्या खाना है, but you have to visit each and every counter to explore that which item is kept where. While GraphQL is like restaurant with waiter. You ordered that I want this sabji, I want this roti, I want dal fry jeera rice. So waiter will be giving you that particular things only. See, in both of this, at the end you will be getting whatever things or food you want in buffet as well as waiter. But in buffet you have to check and explore each and everything, while waiter you will be getting all the ready-made data that you want. So this is the main difference between REST API and GraphQL. So LeetCode uses GraphQL. See, on small to moderate scale applications, REST as well as Graph both works quite good. But whenever an application grows on, when the scale of application is large, at that time, GraphQL is very important. So yeah, let us directly head towards our main agenda, which is of analyzing the how front end back end are actually linked in LeetCode. So yeah, let us head towards the LeetCode. So this is my home page, and those who are not aware, using Control Shift I or another way is right click and inspect, you can come to know a huge amount of data. That's what's going on really. So shortcut is Control Shift I. So elements console.log means it's a great word in itself, this inspect section. But we will be mainly analyzing network, because whatever API or network calls are done, they are always done in this section. Means whatever data is going and whatever data is coming, it will be shown in network section. So whenever I refresh this section, see, you will be seeing a huge number of API requests going on, and click on anywhere. So see, preview response, मतलब देखो, लीड कोड के बैक एंड डेवलपर्स जो होंगे ना, उन्होंने ये एक एपीआई बना रखी है. जब भी ये कॉल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई डेटा आएगा जिसका कुछ ना कुछ काम होगा इस फ्रंट एंड पे. अब इसी दिस इज सम रैंडम जावास्क्रिप्ट कोड विच वी आर नॉट अवेयर अबाउट. सो we won't be able to figure out what this particular code is trying to explain. Wait, let me zoom a bit. But our main interest, or some things that we can understand really, will lie in the requests which are made for GraphQL specially. For example, yes, here as you can see, payload. Okay, let us check something more. This is mainly related to response. Yes, yes, yes. This is something useful. See, this is contest badge. Contest badge. I am not having any badge. So if you are knight or guardian, you will be getting contest badge here. Username is my Raman underscore 00. See, there are many people who are uploading some of the profile URL. For example, Twitter, LinkedIn, GitHub. So I have not uploaded neither of them. So see, you can see null over here. And this is my rank. As you would see, my rank is 3 lakh 647. Corresponding rank is here. See, this is my avatar. For example, I have kept Gojo Satoru image, and whenever I opening it in new tab, you will see this my avatar. So all these are details of my profile. Let's check something else. See how many problems I have solved. As you can see, 337 problems in C++, problems solved in Python, JavaScript, Python 3. Means initially data is coming over here, and the front-end engineers would have written some code in React, or I am not aware about that in which language the front-end is being handled in LeetCode. But all this data which is coming here is painted or uploaded over here using some logic. See, this is initially good. You will be okay, enjoying. But whenever we will be going into the question section, when we will be submitting an error, that one is quite interesting. Here you can see how much data stream tag I have solved. 1 divide and conquer problems 9. मतलब ये जो main page का होता है यही है. See, let me tell you. Yeah, this one is great. So for example, many a times you can get graph like this. अब ये कैसे आता है? See, LeetCode sends data of all the contest
इट इज सेंडिंग डेटा फ्रॉम वीकली कंटेस्ट टू, मतलब जितने भी कंटेस्ट हुए लीड कोड पे सभी का डेटा देगा, और टिल द लास्ट इंडेक्स विच वाज ऑन संडे विच इज इन कंटेस्ट 454। ओके, उसका भी अपडेट आया नहीं है। दिस इज 440 453, मतलब लास्ट संडे तक का सारा डेटा है। और अगर अटेंडेड ट्रू होगा मतलब वो यहाँ पे डेटा पेंट होगा, और जिसमें मैंने अटेंडेड फॉल्स है वो मेरा डेटा यहाँ पे नहीं शो होगा। अभी फ्रंट एंड पे हमको पता नहीं है, चार्ट जेस यूज कर रहे हैं, रिचार्ट्स यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें नहीं पता, पर हमें पता है कि बैक एंड से ऐसा कुछ डेटा आ रहा है। डिफिकल्टी हार्ड मतलब काउंट जो है इजी मीडियम का वो सब है, मतलब इसका है बेसिकली 843 हार्ड प्रॉब्लम्स है टोटल। वैसे ग्राफ क्यूएल डिफिकल्टी मीडियम, सी एवरीथिंग इज मतलब काफ़ी डीप डेटा आता है। सी इन सच केसेस लीड कोड काफ़ी सारा डेटा आ रहा है, सो इन सच केसेस ग्राफ क्यूएल इज वेरी यूजफुल। So this was mainly of my profile for anyone's profile section. Now this one is really interesting. For example, yeah, whenever you are reloading at that time, see again a huge number of API requests are done, and whenever you will see GraphQL, there will be always some response coming from backend. See, all these are empty, so every time it's not mandatory that response is coming every time. This is something envelope GraphQL. सो मीन्स काफ़ी सारा डेटा आता है, अभी एक को एनालाइज करना पड़ेगा। यू कैन डू इट ऑन योर ओन, मतलब इट्स अमेजिंग वॉचिंग सच थिंग्स दैट हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्क। काफ़ी मज़ा आता है। जितने भी मतलब डेटा चेक करना है आपको ग्राफ क्यूएल में जाके देखते जाने का, सब में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। as soon as I will start scrolling, you can see data is coming. It means pagination is implemented. Yes, pagination is implemented. क्योंकि जैसे ही आप स्क्रॉल करते जाओगे उसी टाइम डेटा लोड होगा, सारा का सारा डेटा एक साथ नहीं देंगे, बिकॉज इट इंक्रीज अननेसेसरी लोड, और मतलब ब्राउजर पे लोड बढ़ जाता है। देखिए cpb.json, अभी जैसे भी आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग एनी काइंड ऑफ ब्रैकेट, आई एम जस्ट राइटिंग ओपनिंग ब्रैकेट बट ऑटोमेटिकली इट इज सजेस्टिंग मी क्लोजिंग ब्रैकेट। ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज सी दैट लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड हियर। सराउंडिंग पैर्स, ऑटो क्लोजिंग पैर्स, ब्रैकेट्स किन किन टाइप के होते हैं, इस टाइप के, लाइन कमेंट, ब्लॉक कमेंट, सी एवरीथिंग इज डिफाइंड हियर। सो ओके, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम अभी इरेज कर देते। जैसे ही हम कोड सबमिट करेंगे आप देखना इंटरप्रेट सॉल्यूशन की एपीआई रिक्वेस्ट गई है, इसका हम पेलोड देखते क्या क्या जाता है। देखिए क्वेश्चन का आईडी जाएगा 3893, जो कि क्वेश्चन का नंबर ही होगा। ओके, ये नहीं है। ओके, इन लोगों ने कुछ अलग रीच से इम्प्लीमेंट किया होगा बैकएंड में। अभी डेटा इनपुट लीड को डेली स्टिक अचीव्ड, और ये सारे टेस्ट केसेस जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो लीड को डेली स्टिक अचीव्ड, यहाँ पे लीड को डेली स्टिक अचीव्ड, कैन आई गो देयर एंड एच, ये देखिए ये सारे इनपुट है। लैंग्वेज कौन सी है? सीपीपी। क्वेश्चन का आईडी जो वो लोग कर रहे होंगे पता नहीं, और जो भी हमने कोड टाइप किया है यहाँ पे इस सेक्शन में, देखिए वो सारा का सारा कोड यहाँ पे, एंड इट इज गोइंग एज अ पेलोड। और जैसे ही ये होगा ये चेक होगा, देखिए इसका रिस्पॉन्स आप देखोगे ना, इसका तो कुछ नहीं होगा रिस्पॉन्स। देखिए ये भी स्टेट पेंडिंग है। ये क्या है पता है? ये बेसिकली प्रॉमिस है। प्रॉमिस अगर आप जावास्क्रिप्ट को पता है, जावास्क्रिप्ट जो दोज आर अबाउट जावास्क्रिप्ट के जो भी ऐसे एसिंक्रोनस इवेंट्स होते हैं वो रिटर्न करते हैं प्रॉमिस। उसके 3 स्टेट होते हैं, पेंडिंग, कंप्लीटेड एंड रिजेक्टेड। ये आप देख सकते हो पेंडिंग स्टेट है, और देखिए लास्ट चेक में फाइनली हो गया है, रन सक्सेस यहाँ पे ट्रू हो गया है, मेमोरी जितनी भी यूज हुई होगी वो हो गया है, इलेप्स्ड टाइम 14%, फिनिश टाइम ये सब तो ठीक है, एक्सपेक्टेड मेमोरी सब ठीक है। देखिए टोटल करेक्ट है हमारे 3, टोटल टेस्ट केसेस है 3, इसलिए सभी यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्लस प्लस कर दिया और अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई एरर आने के चांसेस है। देखिए रॉन्ग आंसर आ चुका है, इंटरप्रेट सोल्यूशन गया, पेंडिंग पेंडिंग, अभी स्टार्टेड हो गया, मतलब
तब हमारा स्टार्ट हुआ होगा बैकएंड में, क्योंकि लीड कोड का जहाँ पे भी सर्वर है वहां पे उन लोगों ने सी प्लस प्लस का एक पूरा कंपाइलर बिठा के रखा होगा। और चेक, यहाँ पे देखिए ये तीन थे, आउटपुट लिस्ट तो ठीक है। अभी एक्सपेक्टेड ठीक है। अभी टोटल टेस्ट केस थे तीन, करेक्ट मेरा एक हुआ है सी, और उसमें से दो मेरे गलत है। तो वो भी शायद दिखाया होगा कहाँ पे गलती हुई है। चेक रिस्पॉन्स, इट्स देयर रिटर्न। I saw it previously, but I am not able to find out that where it was written exactly. Okay, okay, yeah, got it, got it. See, for example, I am creating error here because I am not writing semicolon, which should be there in ideal case of C++. See, the data is being loaded, and this is this check, and yes, as you can see, run success false, मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है और कंपाइल एरर आ रही है। लाइन 17 पे देखो, ये डिट्टो कंटेंट यहाँ पे पेस्ट हो गया है। लाइन 17 कैरेक्टर 25 एक्सपेक्टेड दिस, और फुल कंपाइल एरर, मतलब वो नीचे पूरा प्रिंट हुआ है। अभी व्हाट्स द मीनिंग, सी इफ कंपाइल एरर इज देयर एंड सी line is also written, it means on line 17th the front end engineers would have written such kind of logic that, see, this I is an image which is coming over here, as you can see here, ये एक इमेज है एसवीजी जो कि ये इस एक्सक्लेमेटरी मार्क का है। मतलब अगर लाइन 17 पे एरर है तो लाइन 17 का ये वाला जो यूआई कंपोनेंट है वहां पे 17 की जगह आ जाएगा ये लाल कलर का लोगो, एंड दिस करस्पॉन्डिंग अंडरलाइन शुड बी रेड टू डिनोट एरर। अभी पूरा कंटिन्यू ही नहीं करा है तो कोड चल जाएगा पर एरर नहीं आएगा शायद से। सो करस्पॉन्डिंगली रॉन्ग आंसर विल बी गिवन, एंड उसी तरह से सब लॉजिक आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट डूइंग आई प्लस प्लस, just a second, and here we are erasing I plus plus completely, so it will be giving time limit actually, obviously. Check, okay, I plus plus टाइम लिमिट क्यों नहीं आ रही है भाई? ठीक है, वो तो टाइम लिमिट आएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग एरर आ जाएगा। इट्स नथिंग मच इंटरेस्टिंग और नथिंग मच एक्सक्लेमेटरी अबाउट दैट, क्योंकि हमने काफी सारे एरर देख लिए। But yes, this is the main thing, that how you are submitting the question corresponding the backend processes all the corresponding input that is coming from client. It runs on the compiler which is deployed on the LeetCode's server. It generates a response data which is wrapped and sent using GraphQL. मतलब GraphQL जैसे कि बोला, it's a restaurant having waiter, so जितना भी डेटा हमें चाहिए उतना ही डेटा आएगा। while in REST API some extra data was also coming, and that you have to compute on front end, which creates some cost, some sort of extra time complexity, or we would say overhead. तो GraphQL लीड कोड यूज कर रहा है, एंड या दैट्स इट। जब मैं आज दोपहर को इसको एक्सप्लोर कर रहा था मुझे तो बहुत मजा आया था, क्योंकि मैं तभी काफी डीप में गया था। पर अभी हमारे वीडियो के टाइम की थोड़ी लिमिट है, ऑलरेडी 20 मिनट्स होने को आया है। सो आई एम सॉरी, आई वुड नॉट explain or explore this complete inspect section in so much depth because of limitation of timing of the video, but I would request all of you to please explore। मतलब काफी मजा आएगा। स्टेटस कोड, सी पेलोड क्या जा रहा है, प्रीव्यू क्या आ रहा है, रेस्पॉन्स क्या है,
इनिशिएटेड टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा मतलब यू विल बी अमेज टू एक्सप्लोर सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड कुकीज यस मतलब ये तो पूरा अलग ही दुनिया है साइबर सिक्योरिटी का सो या आई थिंक दिस इज इनफ फ्रॉम माई साइड एंड प्लीज एक्सप्लोर दिस थिंग we will be meeting in the next video very soon till then keep learning keep hard working thank you very much